Morning students. In today's lecture we will discuss about the applications of first law of thermodynamics. Right? Now, according to first law of thermodynamics, whatever be the heat energy is supplied to the system, that is used in two ways: to change the internal energy and to do some work. Right? If we say this is a thermodynamical system in which this is a frictionless piston and a gas is enclosed, and if we supply some heat to it, right, dq is the amount of energy supplied, so it increases its temperature. And what is the work done? Work done is, suppose this piston moves upward through a small distance dx. So what is this? Due to which it creates some force, dw is equal to f into dx. But here in place of f I will take pressure into area into dx. Force as pressure into area. What is area into dx? It is the change in volume of the gas. So you can write this as dq is equal to du plus p into dv. What is work done? Pressure into change in volume. We have calculated this here, that dw is equal to p into dv. Now we have to discuss in its application first for isothermal process. If isothermal process is there, student, in the last video I have not told about you that the internal energy depends upon temperature for a ideal gas. आइडियल गैस में आपकी जो इंटरनल एनर्जी है वो किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर पे. यू कैन नोट डाउन इंटरनल एनर्जी ऑफ an ideal gas only depend upon temperature, and for real gas the internal energy of a real gas, it depends upon temperature and volume. So we are taking all these processes for which? Ideal gas. Now for isothermal process. What is isothermal process? The temperature in which the temperature remains constant. If I will say dq is equal to du plus dw, then if temperature is constant, what is the change in internal energy? Is zero. Because temperature is constant, therefore the change in internal energy is zero. क्योंकि आपकी internal energy किससे change होगी? Only it changes with temperature. तो dq is equal to 0 plus dw. It means the amount of heat is used to do some work on the system. Second is for adiabatic process. For adiabatic process, what is constant? You can say heat content is constant, means there is no change in heat amount is constant. This means dq is equal to 0. तो dq कितना हो गया? du plus dw. तो dq 0 है, this means du plus dw, and du is equal to minus of dw. Here work is done on the system, right? Here energy is negative of work done. Is it clear? du must be negative here. This implies internal energy decreases. Internal energy decrease. और internal energy decrease कब होगी? When the gas expands. When the gas expands adiabatically, cooling of gas takes place. Gas expands adiabatically, right? Next is, third is आइसोकोरिक प्रोसेस. कौन सी थी आइसोकोरिक प्रोसेस? जिसमें आपका वॉल्यूम क्या रहेगा? कांस्टेंट. अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो dv क्या रहेगा? 0, राइट? तो अभी हमने पढ़ा dq इज इक्वल टू du प्लस dw, और dw मैंने आपको क्या बताया? दिस इज p इंटू dv. तो यहाँ चेंज इन वॉल्यूम क्या है? दिस इज 0, तो dv 0 है. आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए वॉल्यूम कांस्टेंट है, चेंज इन वॉल्यूम इज 0. तो आपकी होल ऑफ द एनर्जी इज यूटिलाइज्ड टू चेंज इट्स इंटरनल एनर्जी. dq इज इक्वल टू du. नाउ फॉर साइक्लिक प्रोसेस. क्या होती है साइक्लिक प्रोसेस? जिसमें नंबर ऑफ चेंजेस होते हैं और स्टार्टिंग एंड फाइनल पॉइंट्स आर सेम. Means after a number of changes the system reaches to the same state again. For cyclic process, starting and final state is same. अगर टेम्परेचर में कोई चेंज हुआ तो फाइनली टेम्परेचर क्या रहेगा? सेम.
तो अगर फाइनल टेम्परेचर सेम है तो आपकी चेंज इन internal energy क्या होगा, 0. Therefore du is equal to 0 and dq becomes equal to dw. Means the heat energy which is supplied, that is to used in doing the work. Now the next application is Maier's formula, very important. Maier's formula, that is the relation between two specific heats, two specific heats of gas. ठीक है, और ये होती हैं Cp and Cv. This is the specific heat at constant pressure, at constant specific heat at constant pressure, and this is the specific heat at constant volume. And we have to find Cp minus Cv is equal to R. ये आपका R क्या होता है, गैस कांस्टेंट. स्टूडेंट इसमें हम दो स्टेप्स में इसको करेंगे. लेट अस सपोज there is a container, this is a cylinder in which 1 gram mole of gas is taken. 1 gram mole of gas is taken, right? And first the gas is heated at constant volume. किस पे हीट किया आपने, कांस्टेंट वॉल्यूम पे. अगर कांस्टेंट वॉल्यूम है तो आपको क्या करना है, चेंज इन वॉल्यूम कितना होगा, 0 कांस्टेंट वॉल्यूम पे. तो पहले हम इसमें आपने हीट सप्लाई की. लेट डी क्यू इज़ द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई. आपने इसको चेंज किया, डी क्यू अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई किए. इट इज़ यूज्ड इन 2 ways. फर्स्ट टू चेंज इट्स इंटरनल एनर्जी एंड सेकेंड टू डू सम वर्क, राइट. दिस इज द first law of thermodynamics and this is dq is equal to du plus p into dv. अब ये कितना हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम है तो dv कितना होगा, 0. तो dq is equal to p into 0. this is 0 means dq is equal to du. this is equation number 1. now एक फॉर्मूला आपने केमिस्ट्री में शायद पढ़ा होगा, वेन एवर स्पेसिफिक हीट इज m इंटू सी इंटू डी टी या डेल्टा टी. Q is equal to m into C into delta T. Here dQ is the amount of heat supplied at constant volume. Then this is the specific heat at constant volume. Change in temperature takes place is dt. और मास ऑफ गैस हमने कितना लिया, 1 ग्राम. तो dQ कितना हो जाएगा, दिस इज CV into dt. Put this value here. This becomes CV into dt is equal to du. This is equation number 2. ये हमने फॉर्मूला यूज़ किया, द हीट विच इज सप्लाइड टू दिस मास m, q इज इक्वल टू m इंटू सी इंटू डेल्टा टी. हीट सप्लाई करने से कितना टेम्परेचर राइज हुआ, dt. कांस्टेंट वॉल्यूम पे कर रहे हैं, इट इज cv. व्हाट इज cv, दिस इज द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन नंबर 2 आपके पास आ गई. नाउ स्टेप 2, गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर, at constant pressure so that the change in temperature is same as when gas is heated at constant volume. आपका जितना चेंज इन टेम्परेचर यहाँ पे हुआ, सेम इज द चेंज इन टेम्परेचर व्हेन द गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर. तो आपने अब आपको गैस को कैसे हीट किया, आपने इसे कांस्टेंट प्रेशर पे, राइट. ये स्टेप 2 है. ये आपके पास गैस है और ये कांस्टेंट प्रेशर पे आप हीट कर रहे हैं इसे, सो दैट द टेम्परेचर रिमेन इज सेम. तो डी क्यू इज इक्वल टू m इंटू सी पी इंटू डी टी. एट कॉन्स्टेंट प्रेशर है तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, दिस इज द स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर. मास इज 1 Cp इंटू डी टी. डी क्यू डैश इज द हीट अप सप्लाइड. अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, dq dash is equal to du dash plus dw dash, राइट. अब dq dash हमने ऊपर से ये कितना निकाला यहाँ, cp इंटू डी टी. du dash ये आपका इंटरनल एनर्जी जो होगा, du dash इज इक्वल टू du.
Why? Because in both the processes the change in temperature is same. चेंज इन टेम्परेचर इज सेम. और इंटरनल एनर्जी किससे आप डिटरमिन करते हैं? थ्रू द टेम्परेचर. अगर चेंज इन टेम्परेचर सेम है तो जो आपकी इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट वॉल्यूम में थी सेम इज हेयर, प्लस पी इंटू डी वी. dw dash is p into dv. This is equation number 3. Now from equation number 2 put the value of, what is the value of du from equation number 2? Du is cv into dt. Put this value here. Du is cv into dt. cp into dt is equal to cv into dt plus p into dv. Combine the terms cp and cv. Cp minus Cv is into dt is equal to P into dV. This is equation number 4. Now from gas equation, you can write PV is equal to nRT या RT, और अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करें P इंटू डी वी इज इक्वल टू R इंटू डी टी. ये हमने यहाँ इसको डिफ्रेंशिएट किया. डिफ्रेंशिएटेड P इंटू डी वी इज इक्वल टू R इंटू डी टी. क्योंकि प्रेशर तो कांस्टेंट है, वो टर्म जीरो हो जाएगी आपकी. ऑन कंपेयरिंग 4 and 5, तो आपके पास सी पी माइनस सी वी किसके इक्वल आ गया? ये टर्म्स तो आपकी सेम हो गई. पी डी वी सी पी माइनस सी वी इंटू डी टी इज इक्वल टू आर इंटू डी टी. It get cancel out and Cp minus Cv is equal to R. This is the required Mayer's formula, right? This is the relation between the two specific heat. One is the specific heat at constant pressure and second is the specific heat at constant volume. Now the next is limitations of first law of thermodynamics. There are three limitations. First limitation is it does not indicate the direction in which the change can occur. It does not indicate the direction in which the change can occur. इसका एग्जाम्पल लेंगे. फॉर एग्जाम्पल when two bodies at different temperature, ये दो बॉडीज हैं आपकी. वन इज एट टेम्परेचर T1 एंड सेकेंड इज एट टेम्परेचर T2, राइट? एंड T1 इज ग्रेटर देन T2. तो हीट कहाँ से कहाँ फ्लो करेगी? फ्रॉम अ बॉडी विच इज एट हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, राइट? इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट द हीट फ्लोज फ्रॉम अ बॉडी टू लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर. तो इस लॉ में ये नहीं आपको पता चलता इन विच डायरेक्शन दिस चेंज कैन अकर. हीट इज फ्लोइंग फ्रॉम दिस बॉडी टू दिस और फ्रॉम this to this. Second is it does not give any idea about the extent of change. Means कितने अमाउंट से एक्सटेंट, कितना मैग्नीट्यूड ऑफ आपका चेंज हुआ है. इट डज नॉट गिव एनी आइडिया अबाउट द एक्सटेंट ऑफ चेंज. इसमें आप क्या कहोगे? इसमें आप देर इज अ चेंज ऑफ हीट एनर्जी इज converted into mechanical energy. Heat energy is converted into heat energy is not converted into mechanical energy by itself. For that you have to use some external agent, right? इसमें आप ये भी कह सकते हो there is no restriction on conversion of mechanical work into heat. आपकी mechanical work हीट में कन्वर्ट हो सकता है. नो रिस्ट्रिक्शन ऑन मैकेनिकल वर्क इनटू हीट बाय इटसेल्फ. जैसे एक आपकी टारगेट पे अगर बुलेट फायर करें तो उसका कुछ पार्ट वर्क, मैकेनिकल वर्क किसमें कन्वर्ट हो सकता है? हीट में. बट बाय इटसेल्फ हीट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू वर्क बाय इटसेल्फ. हीट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू work by itself, right? It is not possible. Third limitation is this law of thermodynamics. It gives no information. This law does not give any information about the source of heat.
whether it is a hot body, whether it is a hot body or it is a hot or a cold body, कि हीट कहाँ से एक्सट्रैक्ट हो रही है, हॉट बॉडी से या फिर कोल्ड बॉडी से, राइट. सो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. नाउ आफ्टर दिस वी हैव सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसमें आपकी दो स्टेटमेंट्स आती हैं. फर्स्ट इज केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट. केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट क्या है ये केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट? It is impossible to construct a heat engine which would absorb the heat from a reservoir and convert 100% of heat absorbed into work. इसका मतलब कि कोई भी हीट इंजन ऐसा नहीं है जो टोटल अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब करे, 100 अमाउंट ऑफ हीट, उसका कुछ पार्ट वो किस में कन्वर्ट करता है, वर्क में, एंड रिमेनिंग इज रिजेक्टेड. सो इट इज इम्पॉसिबल टू construct a heat engine which would absorb heat from a reservoir and convert 100% of heat absorbed into work. मीन्स कुछ पार्ट किस में कन्वर्ट हो जाता है आपका, कुछ पार्ट वेस्ट हो जाता है. सेकेंड इज क्लोजियस स्टेटमेंट. क्या है ये क्लोजियस स्टेटमेंट? इट इज इम्पॉसिबल फॉर अ सेल्फ एक्टिंग मशीन to transfer the heat from a body which is at lower temperature to a body at higher temperature. Heat can easily transfer from a body which is at higher temperature to lower temperature by itself, but it is impossible to design a self acting machine unaided, means without any help of an external agency, which would transfer the heat from a body at lower temperature to the body at higher temperature. यानी आपको जैसे रेफ्रिजरेटर में होता है, अगर कहाँ से कहाँ हीट ट्रांसफ़र हो रही है, लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कंप्रेसर. क्या यूज़ करते हैं, कंप्रेसर. यानी आपको एक एक्सटर्नल मशीन, एक्सटर्नल डिवाइस यूज़ करना पड़ेगा विच वुड ट्रांसफर द हीट फ्रॉम अ बॉडी एट लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर. बाय इट सेल्फ इट कैन नॉट डू, राइट. So this is all about the thermodynamics. You have to do these things. That's all. Thank you.